Very good morning everyone. I just had shower. Today is 8th of April. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 8:30 आई एम फ्रेश, आई एम रेडी फॉर माई फ्लाइट. सो आज की जो फ़्लाइट है इट विल बी बैंकॉक, हांगकॉन्ग एंड देन बैक टू बैंकॉक. It will be kind of turnaround, like no layover in Hong Kong. So I'll be coming back to this hotel, but not in the same room. For that मुझे अपना सारा सामान as it is पैक करना होगा. अपने बैग्स लॉक करने होंगे जो कि कार्गो बैग है. कैबिन बैग तो ऑब्वियसली आई टेक इट विथ मी, बट जो कार्गो बैग है आई हैव टू गिव इट टू द होटल. When I come back, they will hand it over to me when I get my room. हमेशा दुबई से टर्न अराउंड करते हैं हम, जैसे कि जेद्दा, इंडिया, बहुत सारे टर्न अराउंड्स होते हैं. बट दिस इज़ दी आई थिंक सेकेंड टाइम, बिकॉज ये मैंने पैटर्न पहले भी किया हुआ है बिफोर कोविड. सो दिस इज़ दी एक्चुअल सेकेंड टाइम जब मैं ये टर्न अराउंड बैंकॉक से कर रही हूँ. अभी मुझे अपना सारा जो खाना है वो पैक करना है, तो उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना खाना कैसे पैक करती हूँ. सो अभी आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो नो दे विल आस्क मी इन द कमेंट्स के इवन वी वांट टू कैरी आवर ओन फूड व्हेन वी ट्रैवल. सो द फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट यू इज़ दैट आप हर जो भी कंट्री आप जा रहे हैं इंटरनेशनली, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिए कि आप क्या खाना ला सकते हैं और क्या नहीं. जैसे कि आपको पता है मैंने सारा खाना जो लाया था इट इज़ पैक्ड फूड. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने कुक किया था या ऐसा कुछ. सो बैंकॉक के लिए ऑल दिस इज अलाउड. जैसे कि मैंने लास्ट फ्लाइट सिडनी करी थी, उसमें मैंने कुछ नहीं लिया बिकॉज नथिंग इज़ अलाउड, एक्चुअली नथिंग. तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था. वहाँ पर मैंने रूम सर्विस ही ऑर्डर किया था. कोई कोई ऐसे लेवर है जो बहुत स्ट्रिक्ट डेस्टिनेशंस जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है. बैंकॉक इज़ फाइन. सो यहाँ पर यू कैन कैरी प्री पैक्ड फूड. सो मैंने सारा पैक्ड फूड ही लिया था. मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया था जो मैंने घर से कुक किया है. So I'll be packing all my stuff and I'll be showing you how do I pack my big suitcase, which is the cargo bag, and what all essentials do I carry. ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. I'll do it quickly because usually I've seen videos about this जो जाते हैं maybe 10-12 minutes. I'll just wrap up in 2 minutes. I'll show you all how do I do it quickly and what all do I carry. एंड उसी के बाद आई गेट रेडी फॉर माई फ्लाइट. अगर टाइम मिला है रेडी होने के बाद, सो आई डेफिनेटली कैच अप विथ यू ऑल. और अगर टाइम नहीं मिला तो आफ्टर लैंडिंग इन टू बैंकॉक आई सी यू ऑल अगैन. So this is basically my food bag, and now I'll show you all how I pack all my eating stuff in this bag, like all my food. So I'll put these meals down. Okay, and after that I'll put this rice cracker on the side and soup packet on this side. On the top shelf it's secure, and masala chai over here, and I'll just zip it to secure it. I have this milk couplets, or you can say creamers, which I'll put on this side on top. And what else? Okay, I have these bottles and some 88s. So I usually carry Ziploc bags for these, just in case if they spill. So I'll put them in that. We'll just keep it aside. Bread and this bread. Some stirrers for the tea. Right now what I have in my bag is all the fresh clothes which I'll wear when I come back from the turnaround, which I'll do today. This in the pink bag is the clothes which I've already worn today, and just not to contaminate my other clothes, I've kept them in this laundry bag. What else? This is some personal care. This is my skincare. Usually I have all the miniatures in this. This is Neutrogena Hydro Boost water balm for skin. This is my facial cleanser, some tissue, vitamin E face wash, and some skin mask. This is my makeup bag. Good brows, good mood, good day. So first we'll put this food bag, which will go right over here, and then my
seating box, and then all the other aerateds and juices will go like this. And what else is left? Yes, my other pouch here, and my makeup pouch which will go over here. I also do have one more bag like this, which is my amenities bag, which will go last when I pack my bag and I close it. So when I do that, I will surely show you all. So this is my last bag, which is the amenities bag, which will go over here. So I'm ready before my wake-up call. So this is done. Now I'll quickly put a towel to secure it because this side is empty. So this is Sahim's towel. That's it. I think this is what I'm wearing now. I'll just put it on top and then secure my bag like this. So yep, I'm ready. My makeup and hair is almost done. I think I just need to change into my uniform, and that's it. This is now my wake-up call, but I'm ready now because I was making a reel and I wanted to put it before I leave for the flight. So you can see I've done some new hairstyle, braiding, and then a donut. Let's change quickly into uniform and then complete my reel. I am ready in my uniform and everything is wrapped up. I still have 45 minutes, but I'll read my documents and get ready for the flight. With that said, let's end this video right here. If you like this video, please do not forget to hit the like button, share, comment, subscribe. Also, constructive criticism is always welcome on this channel. Like I always say, work hard on yourself, and all those who are jealous of you, let them go to hell. With that said, take care, bye-bye.